Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, JK, SSB, which is in it, police, railway and interstate level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank PO clerk, SSC, JK, SSB, UGC net, police, railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter each part at least twice and they can also practice MCQs PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड प्रीवियसली हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 2 MCQ PYQ सेट्स इन विच वी हैड डिस्कस्ड एट लीस्ट 37 क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं। Today this will be our third or last MCQ PYQ set from this chapter. So let's start with the question number 38. The first question is dash dash is a written description of a computer program's functions. This question had been already asked in SPI PO 2014. Your options are 1. Explanatory instructions, 2. Graphical user interface, 3. Plug and play, 4. Readme files and 5. Documentation. Here the correct answer is option 5, documentation. Let's see an explanation. जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं these are the written materials जो कि डिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को इंक्लूडिंग फंक्शंस, पर्पसेस एंड हाउ टू यूज़ एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो कि बेसिकली एक्ट करते हैं एज गाइड फॉर यूजर्स एंड डेवलपर्स। व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 1 एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ मोर जनरल टर्म, बट जो डॉक्यूमेंटेशन है इट इज़ मोर कम्प्रहेंसिव टर्म दैन इट। देन ऑप्शन 2 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इंटरफेस लाइक मेनूज, आइकन्स, बटन्स जिनको यूज़ किया जाता है टू इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम। देन ऑप्शन 3 प्लग एंड प्ले जो है इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज it is basically an ability of a device to work with the computer system without requiring mutual considerations. Then option 4 readme files it is also incorrect because these are basically the short text files जो कि provide करते हैं basic information about the program that are not fully documented. Hence जो हमारा option 5 है that is our correct answer. Now let us see next question. The question is debugging is the process of. This question had been already asked in RRB NTPC 2016. Your options are 1. A. Rolling out a software program. 2. B. Modifying a software program. C. Checking errors in a software program. And D. Checking the design structure of a program. You have to choose your option from the given codes below. 1C, 2D, 3B and 4A. Here the correct answer is option 1C, that is checking errors in a software program. Explanation. Debugging जो है it is a process of finding and fixing errors or bugs in a computer program, and debugging जो है ये हमें crucial part देखने को मिलते हैं software development life cycles की। Hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let's proceed to next question. The question is translator program used in assembly language is called. This question had been already asked in SPI Clerk 2012. Your options are 1 compiler, 2 interpreter, 3 translation, 4 translator and 5 assembler. Here the correct answer is option 5 assembler. Let's see an explanation. जो assemblers हैं इनको specifically डिज़ाइन किया गया है to translate assembly code into machine code. While if we talk about other options like option 1 compiler जो है it is incorrect because जो compiler है it translate high level programming language into machine code. Then option 2 interpreter जो है it is also incorrect because जो interpreters हैं they run high level codes line by line without creating a separate executable file.
देन ऑप्शन 3 एंड 4 जो है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर, दीज आर आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज बोथ जो टर्म्स है दीज आर द जनरल टर्म्स, बट जो असेंबलर है इट इज़ अ स्पेसिफिक टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एंड जो हमारा ऑप्शन 5 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। Now let's move to another question. The question is the dash dash program is used to convert mnemonic code into machine code. Your options are 1 debug, 2 C++, 3 Fortran and 4 assembler. Here the correct answer is option 4 assembler. Let's see an explanation. Assembler जो है it is a program जो कि translate करता है mnemonic codes को, that is assembly language को, into machine code. Let's rewind a bit. Like जो assembly language है it use symbolic representations that are also known as mnemonics for machine instructions, and it is basically a low level language जो कि हमें हार्डवेयर डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं। वाइल जो assemblers हैं assemblers रीड करते हैं assembly कोड को एज इनपुट, जो कि फर्दर जनरेट करते हैं मशीन कोड को एज आउटपुट। देन कंप्यूटर का जो CPU है दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स मशीन कोड, एज वेल एज जो assemblers हैं they also handle tasks like address calculations and symbol resolution। है जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। Now let us discuss next question. The question is the function of an assembler is, as just we had discussed, I think you will mark it rightly. Here the options are 1 to convert basic language into machine language, 2 to convert high level language into machine language, 3 to convert assembly language into machine language, and 4 to convert assembly language into low level language. Here the correct answer is option 3 to convert assembly language into machine language. Explanation. जो प्राइमरी पर्पस है असेंबलर का दैट इज़ टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, है ना जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज an assembler is a, your options are 1 programming language dependent, 2 syntax dependent, 3 machine dependent and 4 data dependent. Here the correct answer is option 3 machine dependent. Let's see an explanation. जो assemblers हैं these are basically machine dependent because जो assemblers है इनको डिज़ाइन किया गया है to translate assembly language into machine language और binary, जो कि हेल्प करते हैं computers को to understand codes that are written in assembly language। और हर एक CPU जो है दैट नीड इट इज़ ओन असेंबलर बिकॉज हर एक CPU जो है उसकी हमें ओन इंस्ट्रक्शन सेट देखने को मिलते हैं और स्पेसिफिक कमांड्स देखने को मिलते हैं दैट इट अंडरस्टैंड। सो असेंबली लैंग्वेज जो है हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फॉर ईच CPU फैमिली, दैट्स वाई ईच CPU जो है दैट नीड इज़ डिफरेंट असेंबलर दैट नोज हाउ टू हैंडल its own instructions। While if we talk about other options like option 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो असेंबलर है इट इज़ अ ट्रांसलेटर जस्ट लाइक कंपाइलर और इंटरप्रेटर, but it only translate assembly language into machine language or binary codes that CPU further can run। Then option 2 syntax dependent जो है it is also incorrect, while जो syntax और जो rules हैं of any writing written code that are important, but जो main reason है for each CPU that is जो CPU है it need different assembly language is it is architecture। then option 4 जो है data dependent it is also incorrect because जो assemblers है they operate or they function on instructions rather than directly on data। now let us discuss next question। the question is which of the following is not true about an assembler? your options are 1 translate instructions of assembly language into machine language, 2 it translate the C program, 3 it is involved in program's execution, and 4 it is a translating program। here the correct answer is option 2 it translate the C program। let's see an explanation। जो मेन फंक्शन है assembler की that is to translate assembly language into machine language that does not handle high level languages like C or C++। well if we talk about other options like option 1 translates instructions of an assembly language into machine language,
This is basically the core function of an assembler. Then option 3, it is involved in program's execution. Yes, जो आउटपुट है होता है ऑफ एन assembler और machine code, that is what जो CPU है that execute or that it runs. Then option 4, it is a translating program. It is also true. है ना, जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let's see next question. The question is, compiler is a, this question had been already asked in UPSSSC 2015. Your options are 1, computer program, 2, part of software, 3, program for converting from high level to machine language, and 4, all of the above. Here the correct answer is option 4, all of the above. Let's see an explanation. जो कंपाइलर है इट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हमें बेसिकली पार्ट देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर का, और वी कैन से इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल एंड इसको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज विच इज़ बेसिकली इट इज़ कोर फंक्शन है ना। जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज़ करेक्ट आंसर. Now let's proceed to another question. The question is, compiling creates an, this question had been already asked in RBI Grade B 2014. Your options are 1, error free program, 2, program specification, 3, subroutine, 4, algorithm, and 5, executable program. Here the correct answer is option 5, executable program. Explanation. जो कंपाइलिंग है इट क्रिएट एन एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम बिकॉज जो कंपाइलर की प्राइमरी फंक्शन है दैट इज़ टू ट्रांसलेट सोर्स कोड दैट इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड दैट कंप्यूटर्स फर्दर जो कि फर्दर कंप्यूटर्स के सीपीयू समझते हैं और जो कि वो एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ मशीन कोड जो है उसको स्टोर किया जाता है इन एग्जीक्यूटिबल फाइल. While if we talk about other options like option 1, error free program जो है it is incorrect because जो compilers है they also fix syntax error, but the thing is जो compilers है they does not guarantee that कि जो program है it is logically error free now. Then option 2 जो है program specification, it is also incorrect because this is basically a document जो कि describe करते हैं what programmers has to do but not what computer creates. Then option 3 subroutine जो है it is also incorrect because it is basically a part of program but not an entire compiled output. And option 4 algorithm जो है it is also incorrect because it is a set of steps for solving a problem which is not basically a compiled program है ना. जो हमारा option 5 है that is our correct answer. Now let's see next question. The question is, computer programs are written in high-level programming language. However, the human-readable version of a program is called. This question had been already asked in IBPS PO 2015. Your options are 1, word size, 2, source code, 3, instruction set, 4, application, and 5, hard drive. Here the correct answer is option 2, source code. Explanation. जो सोर्स कोड है इट इज़ ए ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ बेसिकली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर्स लिखते हैं और जो कि प्रोग्रामर्स एडिट कर सकते हैं. Well, if we see other options like option 1, word size जो है it is incorrect because it is basically about the number of bits that computer CPU process at the same time. Then option 3 जो है instruction set it is also incorrect because these are the set of commands जो कि CPU समझते हैं और that CPU runs. Then option 4 application जो है it is also incorrect because इट इज़ बेसिकली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को. देन ऑप्शन 5 हार्ड ड्राइव जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज़ बेसिकली ए स्टोरेज डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है फॉर डेटा स्टोरेज है ना. जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, second generation languages are languages that consists of, your options are 1, machine language, 2, assembly language, 3, Java, and 4, Visual Basic. Here the correct answer is option 2, assembly language. Let's see an explanation. And we had already discussed about it in previous lecture. अगर आपने अभी तक उस
वीडियो को नहीं देखा, हमने डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, आप जाके उस वीडियो को ऑल्सो देख सकते हैं। सो एनीवे, देयर आर we had discussed there are five programming language generations that includes first generation जो है that is machine language और binary code, second generation language जो है that is assembly language और mnemonics, third language generation जो है that are high level languages like C, Fortran, COBOL, BASIC, Java etc. fourth generation language जो है these are very high level languages जिनको basically डिज़ाइन किया गया है for specific tasks like SQL। एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो है these जो लैंग्वेजेस है these languages are used in artificial intelligence like Prolog, Lisp etc. है ना, जो हमारा ऑप्शन 2 है that is our correct answer. Now let us see next question. The question is which of the following generation languages consists of statement similar to the statements of human language? Your options are 1 GL, 2 GL, 3 3 GL and 4 GL. Here the correct answer is option 3 third generation languages. Let's see an explanation. जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं these languages include C, Java, Python and Basic. और ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय देयर यूज़ ऑफ स्टेटमेंट जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस विच मेक दीज लैंग्वेजेस मोर programmer friendly compared to earlier generations. Well, if we talk about other options like option 1 जो है first generation languages, it is incorrect because this language include machine language which consists of binary code zeros and ones. Then option 2 second generation language जो है it is also incorrect because this include assembly language जो कि यूज़ करते हैं mnemonics which is basically a low level language. एंड ऑप्शन 4 फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो लैंग्वेजेस है ये हमें मोर यूज़र फ्रेंडली देखने को मिलते हैं दैन थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जिनको यूज़ किया जाता है फॉर स्पेसिफिक टास्क्स लाइक डेटाबेस क्वेरीज लाइक SQL. हाउएवर इट इज़ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जहाँ हम देखते हैं सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स ह्यूमन लाइक स्टेटमेंट्स है ना, जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर. Now let's see next question. The question is a set of step-by-step procedures for accomplishing a task is known as. This question had been already asked in IBPS Clerk 2015. Your options are 1 algorithm, 2 hardware program, 3 software, 4 firmware program and 5 none of the above. Here the correct answer is option 1 algorithm. Let's see an explanation. Algorithms जो हैं these are nothing but a set of well-defined or step-by-step instructions for solving any problem or for performing any task. And algorithm जो है it is a fundamental concept of computer science and programming. And जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let us discuss another question. The question is error in a program is called, your options are 1 bug, 2 debug, 3 virus and 4 noise. Here the correct answer is option 1 bug. Let's see an explanation. In computer programming जो error और जो flaw होता है in any program that causes program to give incorrect or unexpected output that is basically called as bug. Hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let us move to next question. The question is error which occurs when program try to read from file without opening it is classified as. Your options are 1 execution error messages, 2 built-in messages, 3 user defined messages, 4 hop messages and 5 none of the above. Here the correct answer is option 1 execution error messages. Let's see an explanation. जो execution error messages हैं these errors occur during the runtime of any program or during program is running. Like you are trying to read a file that basically not opens, so we can say this is the runtime issue or error जहाँ program जो है that does not know what to read, so जो program है that stops and that shows an error message. Well, if we talk about other options like option 2 built-in message जो है it is incorrect because it is when an error happens during program execution. And
जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट शोज बिल्ट इन एरर मैसेज। और ये जो मैसेज है, दिस मैसेज बेसिकली हेल्प यूजर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग even though you do not write them yourself. Then option 3, user friendly. User defined message जो है it is also incorrect because these are the messages that are basically created by the programmers, which is not basically a case in this scenario. Then option 4, half message जो है it is also incorrect because it is not a standard term used in the computer science. Hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let us see another question. The question is dash dash or words that programming language has set aside for its own use. This question had been already asked in IBPS PO 2011. Your options are 1, control words, 2, control structure, 3, reserved words, 4, reserved keys, and 5, none of these. Here the correct answer is option 3, reserved words. Let's see an explanation. जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं दीज आर दोज वर्ड्स जिनका हमें ओन प्री डिफाइंड मीनिंग देखने को मिलता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो वर्ड्स हैं इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर्स लाइक वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स एटसेट्रा, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये हमें रिजर्व्ड देखने को मिलते हैं फॉर लैंग्वेज सिंटैक्स और रूल्स एंड इट इज़ फंक्शनलिटी। है जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। Now let us discuss next question. The question is dash dash is a cross between human language and a programming language. This question had been already asked in IBPS PO 2012. Your options are 1, pseudocode, 2, Java, 3, the Java virtual machine, 4, the compiler, and 5, none of the above. Here the correct answer is option 1, pseudocode. Let's see an explanation. जो सीडो कोड है इट इज़ वे और मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम लॉजिक दैट इज़ बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड सीडो कोड जो है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू बी ईजी फॉर ह्यूमनस, सो इट कैन बी ईजी फॉर ह्यूमनस टू अंडरस्टैंड, जिसको ऑफन यूज़ किया जाता है एज ए प्रिलिमिनरी स्टेप बिफोर एक्चुअल कोडिंग। While if we talk about other options like option 2 Java जो है it is incorrect because जो Java है it is a high level programming language. Then option 3 Java virtual machine जो है it is also incorrect because इसको यूज़ किया जाता है to execute Java byte codes. And option 4 compiler जो है it is also incorrect because इसको यूज़ किया जाता है to translate high level code into machine code. है जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now next question, the question is in programming repeating some statements is usually called. This question had been already asked in SSC CGL 2013. Your options are 1, looping, 2, control structure, 3, compiling, and 4, structure. Here the correct answer is option 1, looping. Let's see an explanation. जो looping term है इसको यूज़ किया जाता है for repeating a set of statements or instructions in programming context. Now what are loops? जो loops है these are basically the control flow structures जो कि allow करते हैं blocks of code to be executed repeatedly, जो कि हमें crucial देखने को मिलते हैं for automative repetitive tasks and for processing collection of data. And some common types जो हैं loops के that includes while loops and do while loops. While if we see other options like option 2 control structure जो है it is incorrect because it is a part of program जो कि कंट्रोल करते हैं flow of execution, जो कि गाइड करते हैं how a programs run. एंड जो loops है these are the kind of control structures. and looping जो है it means repeating actions by using those loops. Then option 3 compiling जो है it is also incorrect because जो compiling है it is a process of translating source code into machine code which is not basically related to looping. And option 4 structure जो है it is also incorrect because ये हमें जनरल टर्म देखने को मिलते हैं which has nothing to do with the repeating code. and जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now last question of this session, the question is what is the full form of DFD? This question had been already asked in UP PSC Computer Assistant 2019.
Here options are 1 data flow diagram, 2 data full document, 3 data file diagram, and 4 data file document. Here the correct answer is option 1 data flow diagram. Let's see an explanation. DFD जो है it stands for data flow diagram, जो कि हमें basically graphical representation देखने को मिलता है of the flow of information within the system. और DFDs जो है इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड फॉर डिज़ाइन टू विजुअलाइज और टू सी हाउ डेटा जो है दैट मूव्स थ्रू दिस सिस्टम, जो कि हेल्प करते हैं प्रोग्रामर्स को टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, डेटा स्टोरेज एंड एक्सटर्नल एंटिटीज दैट आर इन्वॉल्वड इन इट। है जो हमारा ऑप्शन 1 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर 8 है विथ MCQs एंड होता है। आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। And you can also watch previous MCQ videos as well. And in upcoming videos we are going to discuss theoretical part of chapter 9 and with some important MCQs. So be ready and keep a tab on all those videos. और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, या आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस email. Otherwise you can also follow me on the social media platforms, and for PDF you can join the Telegram group. So guys, that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.